Hello everyone. Today we are going to discuss paper 5 of S1, February March 2023. Now these are the instructions we have to follow. Let's move to question number 1. Each year the total number of hours X of sunshine is recorded during the month of June. So हमें एक frequency distribution table is given to us. Draw the cumulative frequency graph to illustrate the data. Now the very first thing is we have to add another row, that is the cumulative frequency. Now cumulative frequency for the first one will be equals to 4, and if we add the previous frequencies, so this will be 12, then this will be 26, and then this will be 51, and then 58 plus 2 is 60. So this will be the cumulative frequency. Now we have to draw the cumulative frequency curve. So what we will do, we will simply represent cumulative frequency on y-axis, and the hours number of the data, that is X. We will represent the data on y-axis. So total number of hours, so that will be, so let's label the diagram. So this should be, it starts from 30, so this must be 30, then 60, 90, 120, 150, 180, and then 210 and 240. It will cover the whole data. Now on y-axis we have to represent the cumulative frequency. So cumulative frequency कहाँ से start हो रही है? It starts from 4 and it ends at 60. So we can say that this will be, let's say, 10, 20, 30, 40 and 50, and the last one is 60. Now for cumulative frequency, what we have to do is that at 60 the cumulative frequency is 4, at 90 the cumulative frequency is 12. So at 60 the cumulative frequency is 4, so which means that 1, 2, 3, this point should be 4. At 90 the cumulative frequency is 12, which means this is 10 and this will be 12. Similarly at 110, so where will be 110? 110 will be at which point? This must be 105. So after 105 this will be the central point, so this will lie somewhere here. At 105, at 110 the cumulative frequency is 26, so which means that this point will lie here. Now let's see the next point, that is 120, 110 भी हो गया, 140 पे it's 51 and 180 पे it's 58, so 140 कहाँ होगा आपके पास? This will lie somewhere here. So at 140 the cumulative frequency is, at 140 यहाँ पे आपके पास यही होगा, 140 the cumulative frequency is 51, so this will lie here. Now at 180 the cumulative frequency is 58. So 180 कहाँ है? 180, this line is 180, 58. 58 means that this will lie somewhere here. Then the last one is at 240. The cumulative frequency is 180, but 240 पे it's 60. So it will lie somewhere here. So the final diagram will look like this, just like this one. ये appropriate नहीं है, थोड़ा सा इसको आपने कर्व को स्मूथ बनाना है.
So this will be the final answer. Let's move on to the next part. The next part is use your graph to estimate the 70th percentile of the data. Now 70th percentile means 70 divided by 100 multiplied by the highest cumulative frequency. Now from here we can see that the highest cumulative frequency is 60. So at this point we have to see if we multiply it, so this will be equals to 70 divided by 100 multiply by 60. So this will be equals to 42. So it means that we have to see at this point that at 42 what is the value. At 42 we have to see the corresponding value. So using the graph 42 पे आपके पास क्या बन रहा है. So at 42 this will be the point. Let me change the color first. So this will be the point of 42. We have to see the corresponding value at 42. So here it is. As we can see that the curve is not smooth, so it will affect our value. So the graph must be like this. This will be somewhat like this. So at this point we can say that the answer will be approximately 125. Why I am using the word approximately? Because the graph is not smooth. So here for this one, this will be 124 hours will be the final answer. अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी तो वो कैम्ब्रिज एक्सेप्टेबल होता है. लाइक इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी का 123 से लेके 123 से लेके 129 तक की रेंज का होगा, so we can say that +4 or +3 -3. So this range is acceptable. तो इस रेंज में आपका कोई भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा, वो करेक्ट सबसे जाएगा. Let's move on to the next part. Now the next part is calculate an estimate of the mean number of hours of sunshine over the last 60 years. So इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने मीन फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? मीन विल बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ fx बाय समीशन ऑफ f. सो अब हमें टेबल तो गिवन है, तो टेबल को देख के वी कैन से दैट मीन will be equals to 4 multiplied by 45 plus 8 multiplied by 75 plus 14 multiplied by 100 plus 25 multiplied by 125 plus 7 multiplied by 160. I think that is it. Let's see the table. 7 multiplied by this. अच्छा, इसमें हम x क्या है आपके पास? x हम कंसिडर करेंगे जो इसका मिड पॉइंट है. लाइक अगर हम इन दोनों का मिड वैल्यू देखें, that should be 45, this will be 75, this will be 90, and so this should be equals to 100. This should be equals to 125. This one will be equals to 160, and the last one will be equals to 210. This will be the midpoint. So midpoint को हमने देखा. So last one is 210. So plus 210 multiplied by 2 whole is divided by 60. So इसको simplify करेंगे. So this will be equals to 1. Let's see. So let's do it over here.
So 4 multiplied by 45 plus 8 multiplied by 75 plus 14 multiplied by 100 plus 25 multiplied by 125 देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 160 plus 210 multiplied by 2, so this will be equals to divided by 60, so this will be equals to 1309 डिवाइडेड बाय 12, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो ये थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में प्लस माइनस किया है, सो दैट इज़ वाई दिस विल बी इक्वल्स टू द फाइनल आंसर शुड बी इक्वल्स टू 114.5 114.5 दिस विल बी द फाइनल आंसर। और इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा इसकी मैं आपको थोड़ी सी ये वर्किंग ये चीज़ सॉल्यूशन, आपने इसके बाद एक स्टेप और करना है, दैट इज़ 1369 डिवाइडेड बाय 12, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 114.5 और द फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स ठीक हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Alicia has 4 coins. Let's highlight the important points. So Alicia has 4 coins. One of these coins is biased. Now this is an important point. So that the probability of obtaining a head is 0.6 and the other 3 coins are fair. Alicia throws the 4 coins at the same time. The random variable x denotes the, so this is the case. So इसमें Alicia throws 4 coins at the same time. First coin को हम बाइस coins consider करेंगे ताकि हमारे order में कभी भी problem ना हो. The random variable x denotes the number of heads obtained. Show that the probability of exactly one head. So exactly one head की probability है 0.225. So अब हम इसको चेक कर लेते हैं. So this must be equals to, हमने फाइंड क्या करना है, probability of exactly one head. So x को हम क्या कह रहे हैं, x will represent the success, और success the random variable x denotes the number of heads. So ये तो हमें पता है कि this denotes the number of heads. अब इसमें क्या हो सकता है कि 4 coins हैं और 4 coins में head की probability क्या है। ये पॉसिबल है कि फर्स्ट कॉइन पे आपके पास क्या है, हेड टेल टेल। तो एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आ रहा है और उसके बाद टेल टेल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड टेल, या ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले 3 कॉइन्स पे टाइम्स आपके पास टेल आए और 4th कॉइन पे आपके पास हेड आए। अब इसमें एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट कॉइन को हम बाइस कॉइन कंसिडर करने, मीन्स कि ये जो हेड है, फर्स्ट हेड, ये फर्स्ट टेल और फर्स्ट टेल, ये 22 कॉइन्स हैं और आखिरी लास्ट के 3 जो कॉइन्स हैं वो आपके पास फेयर कॉइन्स हैं, तो हम फेयर कॉइन्स को डील कर रहे हैं। नाउ अब अगर हम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो 22 कॉइन है, तो 22 कॉइन में आपके पास हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दैट इज 0.6, सो वी कैन राइट 0.6 इनटू बाकी तीनों कॉइन्स जो है वो फेयर कॉइन है। तो फेयर कॉइन्स का मतलब ये है कि इनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होगी और इसलिए मैं इसको क्यूब कर देता हूँ। प्लस नेक्स्ट पे आए, अब फर्स्ट आपके पास 22 कॉइन पे क्या आ रहा है, 22 कॉइन पे आपके पास
टेल आ रहा है, सो विच मीन्स टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.6 है 22 की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.4। क्यों? बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होती है। तो 0.6 अगर हेड की प्रोबेबिलिटी है तो 0.4 आपके पास टेल की प्रोबेबिलिटी होगी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0, बाकी तीनों चाहे हेड हैं या टेल हैं, इन तीनों फेयर कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी तो 0.5 ही है, इसलिए क्यूब कर देता हूँ। देन आपको ये पता है, थर्ड केस में भी देखें, 22 कॉइन पे टेल है विच मीन 0.4, और तीनों बाकी आपके पास ये हो गए। देन लास्ट वन देखें, फर्स्ट आपके पास 22 कॉइन है और उस पर टेल आ रहा है, और देन आपके पास फेयर कॉइन्स हैं, इसलिए क्यूब कर दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस के लिए कर रहे हैं कि ये जो तीन पोर्शन हैं ये तीनों जो हैं ये सेम हैं, सो मैं एक को ही करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 0.4 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होल क्यूब। इसका जो आंसर आ रहा है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो इस ग्रीन ब्रैकेट का आंसर आ गया। देन प्लस 0.6 इंटू 0.5 क्यूब, so this will be equals to 0.225। यही हमने प्रूव करना था, बट द थिंग इज कि आपने इसकी वर्किंग सेपरेटली करनी है। दिस विल बी 0.075 प्लस दिस विल बी 0.15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.225। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next part. The second part, B part. Complete the following probability distribution table for X. Now here we can see that now we have to complete the table. Now this one is probability of 2 and probability of 3. Let's find out the probability of 3 heads. So x is equals to 3, x is equals to 3, x is equals to 3 का मतलब ये है कि आपके पास हर कॉइन पे 3 आपके पास हेड्स हैं। एक बात आपने अगेन याद रखनी है कि वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट कॉइन एज द बायस्ड कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन को हम बायस्ड कॉइन कंसिडर कर रहे हैं। सो विच मीन्स कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट पे टेल आ जाए, देन आपके पास 3 हेड्स आ जाए, या ये हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट आपके पास हेड हो, देन टेल हो और देन हेड हो, या ये हो सकता है आपके पास कि फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड टेल एंड फोर्थ। अब देन लास्ट ये हो सकता है कि पहले तीनों आपके पास हेड हो और आखिरी टेल हो। इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ टेल को मूव करूं ताकि आपका कोई भी केस इसमें मिस ना हो। अब फर्स्ट कॉइन आपके पास 22 कॉइन है, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि फर्स्ट कॉइन 22 कॉइन है, और 22 कॉइन में आपने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है कि 22 कॉइन के अंदर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी आपके पास 0.6 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, और बाकी फेयर कॉइन्स के अंदर हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब किस तरह फाइंड करेंगे? अब टेल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में क्या है? बिकॉज 22 कॉइन है सो दिस शुड बी 0.4 इनटू, अब हेड तीनों हेड हैं तो 0.5 क्यूब, 3 दफ़ा कर दिया तो क्यूब कर दिया, प्लस अगेन देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 22 कॉइन का हेड है सो 0.6 इंटू, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्यूब, प्लस
अगेन देखें तो 22 कॉइन है, सो 0.6 into 0.5 cube. Then the last one, first one head आ रहा है आपके पास, so 0.6 into 0.5 cube. अच्छा, एक चीज़ अब इसमें आप नोट कर सकते हैं कि आपके पास ये तीनों सेम हैं, सो हम इनको फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट 0.4 into 0.5 cube is equals to 1 by 20, which means 0.05. so 0.05 plus, अब बाकी सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालें, so this will be equals to 0.6 into 0.5 cube. ये आंसर आ गया. मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज ये 3 दफ़ा हो रहा है, 1 2 and 3. so multiply by 3 will be equals to 9 by 40, which means 0.225. so this will be, if we add these two, so plus 0.05, so this will be equals to 0.275. 0.275. तो एग्जैक्टली 3 ऐड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.275. अब लास्ट, अब आपको ये पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है. सो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, तो दिस विल बी 0.05 प्लस 0.225 प्लस 0.275 प्लस 0.075. इन सबको ऐड करके तो 0.275 प्लस 0.075 प्लस 0.225 प्लस 0.05. so this will be equals to 5 by 8. so 0.625. so 1 minus 0.625, 1 minus answer, this will be equals to 3 by 8 or 0.375. so probability of x is equals to 2 will be equals to 0.375. so this will be the final answer, 0.375. that is it for this part. Let's move on to the next question, next part. so in the next part, given that expected value of x is 2.1, find the value of variance of x. so we know that variance will be equals to summation of x square probability of x minus expected value of x, which is the mean value. so x square find करें, so we can see the table. so here in the table these are the values of x और ये आपके पास probability of x है. so हम 1 से start करेंगे because 0 तो multiply होकर 0 ही कर देगा. so we can write it as this will be equals to 1 square multiply by 0.225 plus 2 square multiply by 0.375 plus 3 square multiply by 0.275 plus 4 square multiply by 0.075. so minus, now मीन की वैल्यू क्या है, 2.1 होल स्क्वायर. तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी variance of x will be equals to 0.99. so this will be the final answer for this part. और इसमें एक चीज़ याद रखें, 1 2 स्क्वायर ये हम इसमें कर यही रहे हैं कि हम 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.375, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग. so variance of x will be equals to 0.99.
That is it. Let's move on to the next part. Next question, question number 3. Question number 3. 80% of the residents of Kinwawa are in favor of leisure center being built in the town. Now, this is the question. Let's see that find the probability that more than 17 of these residents are in favor of leisure. So, सबसे पहली चीज तो ये है कि 20 leisure are chosen at random and asked in return whether they are in favor of this leisure or not. Now, what does it mean? Here we can see that this is the success. Okay, so P, the value of P will be equals to 0.8 and the total number of this will be equals to 20. As we can see that X, let's say that X is the random variable and X is equals to, X is the number of resident in favor of leisure center. Okay, leisure center. So now let's see what we have to do. As we can see that this question is related to the binomial distribution, and as binomial distribution is X is binomially distributed such that P and N. So here we can see the value of P and N. So that is 0.8 and N is 20. So let's move on to the next one. Probability of X greater than 17 is equals to what we have to do, we have to find out the probability that is more than 17. अब इसको more than 17 के दो ways है. एक ये है कि आप less find कर लें और उसको 1 में से minus कर दें. Second, the easiest one will be probability of X is equals to more than 17 है तो 18, 19 और 20 इन तीनों की probabilities निकाल के इनको हम add up कर लें. So we can write it as probability of X is equals to 18 plus probability of X is equals to 19 plus probability of X is equals to 20. Now we know the formula for the binomial distribution is, binomial distribution का जो formula है that is, this is the formula for the binomial distribution. So what we can do is we can use it over here. So for first one, basically this portion represents NCR, where N is here. We know that R is 18 and N is 20. This is N and this one is P. So if P is this, so Q will be equals to 0.2 because Q is equals to 1 minus P. So Q will be equals to 1 minus 0.8. So ये 0.2 आ रहा है आपके पास. So that is why further we can see, we can directly apply the formula. Now for NCR means 20 C 18 into 0.2 power 20 minus 18 into Q. Q is 0.8, so P is 0.8 whole power 18 plus 20 C 19 into 0.2 power 20 minus 19 into 0.8 power 19, then plus 20 C 20
into 0.2 whole power 20 minus 20, 0.8 power 20. Now if we simplify it using the calculator, वन बाय वन इसको हम देखते हैं. 20 shift C18 into 0.2 power 0.2 power 2 हो जाएगा, because 18 minus 20 minus 18 is 2, so हम डायरेक्टली 2 लिख देते हैं. into multiply by 0.8 whole power 18, और this will be the math error because अभी हम ब्रैकेट्स के अंदर बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम विद इन द ब्रैकेट यूज़ करें. सो स्क्वायर इंटू 0.8 power 18, so like 20 shift C18, so this will be 190 multiply by 0.2 square multiply by 0.8 whole power 18. सेपरेटली करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.136909. सो 0.136909 प्लस सेकंड को देखें. तो सेकंड के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली राइट 20 C19 multiply by 0.2 पावर 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. मल्टीप्लाई बाय 0.8 पावर 19, 0.8 पावर 19, 0.8 power 19. This will be equals to 0.5764, 0.5, oh no, this will be 0.05. So 0.05764. Now let's see the last one. 20 C20 मल्टीप्लाई, अब इसको 0.2 मल्टीप्लाई पावर ये 1 ही आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय 0.2 पावर 20, so this will be equals to 0.11529. so plus 0.0111529. अब इन सबको ऐड करेंगे, सो प्लस 0.05764 प्लस 0.136909. so this will be equal to 0.206. so probability which is, that is x is greater than 17, will be equals to 0.206. so this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next part, next question. Let's see the part B. Now in part B, find the probability that the fifth person asked is the first person. अब जब first person का केस जब भी होगा, it means that this is the case of geometric distribution. So ये geometric distribution का केस है, because here you can see that the first person के बारे में है,
is not in favor of the leisure center. So what does it mean? It means that probability not favor leisure center is 0.2. It means कि आपके पास जो फेवर में है वो आपके पास 0.8 पे है. लेट्स सपोज फर्स्ट केस में आपके पास 0. तो इसको अगर आप देखें that this is the fifth person asked is the first person, fifth person asked is the first person. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट पर्सन था that was in favor, so favor का 0.8 है. Second person was 0.8, third person is 0.8, fourth is 0.8, and the fifth person is not in favor, so it means this will be equal to 0.2. So we can say that 0.8 whole power 4 multiply by 0.2, so this will be equals to 0.8 whole power 4 multiply by 0.2, so this will be equals to 256 by 3125, 256 by 3125. This is the exact answer. और अगर हम डेसिमल में देखें तो this will be equals to 0.08192, 0.08192. Now this will be the final answer. प्रेफर ये है कि एग्जैक्ट आंसर लिखें. अगर ये डेसिमल कंटिन्यू रहते हैं तो हम फ्रैक्शन में ही इसका आंसर लिखते हैं. Let's move on to the next part. Next part is find the probability that the seventh person asked is the second person who is not in favor of the leisure center. So what does it mean? It means that this is not the geometric distribution and this is not the binomial. Basically we can say that this question is the combination of geometric distribution and binomial distribution. So let's build a case first. तो केस इसका हम क्या बना सकते हैं कि let's see the possible cases. So possible cases ये हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7. Then we have 1 2 3 4 5 6 7. तो ये डिफरेंट हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं. इसको हम वन बाय वन देखते हैं. So now we can see here that क्वेश्चन ये था कि सेवंथ पर्सन आस्क्ड इज द सेकंड पर्सन. अब ये पॉसिबल है कि फर्स्ट ये हो और फिर सेवंथ पर्सन आस्क्ड इज द सेकंड पर्सन, बाकी आपके पास ये ना हो. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस आपके पास ये हो सकता है कि ये सेकंड पर्सन हो और बाकी सारे क्या हो, नॉट इन फेवर हो. सेकंड पर्सन आस्क्ड who is not in favor, he is not in favor. So second person not in favor है तो इसलिए मैं टिक लगा रहा हूँ. ये हमारा रिक्वायर्ड हो सकता है. थर्ड केस आपके पास ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो नॉट इन फेवर हो. लास्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें सेकंड जो पर्सन है वो, तो इसको हम फर्दर चलते जाएं तो ये हो सकता है कि ये भी ना हो और ये हो और लास्ट वन हो, और उसके बाद फर्दर ये हो सकता है कि ये भी ना हो, फिफ्थ हो, और लास्ट ये है कि आपके पास जो नॉट इन फेवर हैं वो सिक्स पर्सन हो और सेवन्थ पर्सन हो. सो ये है, ये हमारे पास सिक्स पॉसिबल केसेस बनते हैं. तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें तो फर्स्ट केस में नॉट इन फेवर कितने हैं, 2 हैं. सो 0.2 प्रोबेबिलिटी थी होल स्क्वायर, और फेवर में आपके पास 5 प्लेसेस हैं, वो हैं 1 2 3 4 एंड 5. दीज वी कैन सी दैट ये 5 प्लेसेस हैं. 0.5 होल 0.8 बिकॉज ये नॉट इन फेवर की प्रोबेबिलिटी थी.
ये फेवर की प्रोबेबिलिटी थी 0.8 होल पावर 5। सेकेंड केस के लिए देखें तो ये भी आपके पास क्या होगा, 0.2 होल स्क्वायर है और 0.8 होल पावर 5। तो बेसिकली हर एक केस के लिए आपके पास ये सेम आ रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। सो वी कैन राइट इट एज 0.2 होल पावर 2, 0.8 whole power 5 into, this should be multiplied with 6. So this will be equals to, let's see the final answer. This will be equals to 0.2 whole square, 0.2 whole square is equals to multiply by 0.8 whole power 5 multiply by 6. So this will be equals to 0.078. So 0.078, this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next question. Question number 4. The probability that it will rain on the given day, let's highlight the important points. The probability that on given day is X. If it is raining, the probability has that Aaron wears the hat is 0.8 or wears the hat, and not if it is not raining, so अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया तो हो रहा है कि हमारे पास दो केसेस, दो सिनेरियोज बन रहे हैं. फर्स्ट वन इज that if it is raining and if it is not raining, so the probability that it will rain on the given day. So rain की probability आपके पास क्या है, x है. तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 माइनस एक्स होगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप माइनस करते हैं. इफ इट इज रेनिंग दैट आर एन वेयर्स द हैट इज 0.8. इसका मतलब ये है कि इफ इट इज रेनिंग, सो रेनिंग के केस में हमारे पास हैट पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0.8. सो नॉट हैट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट हैड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2 होगी. देन इफ इट इज नॉट रनिंग, द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स अ हैट इज 0.3. नॉट रनिंग है तो हैट पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3. अगर ये 0.3 है तो नॉट हैड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.7. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. ये हो गया. Whether it is raining or not, if Aaron wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4. इसका मतलब ये है कि चाहे रेन हो रही है या नहीं हो रही, whether it is raining or not, if Aaron wears a hat, इसका मतलब ये है कि अगर हैट पहना है तो स्कार्फ पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.4. This will be, scarf की probability will be 0.4. Not scarf की क्या होगी, 0.6. Similarly, अगर hat पहना है तो scarf पहनने की probability क्या होगी, 0.4. Not scarf की probability क्या होगी, 0.6. यहाँ तक क्लियर है. Okay, let's move further. If he does not wear a hat, the probability that he wears a scarf is 0.1. So इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हैट नहीं पहनी तो इस केस में the probability to wear a scarf is 0.1 और not scarf क्या है, that should be 0.9. और अगेन अगर हम लास्ट वन पोर्शन में भी देखें, scarf, not scarf, 0.1 and 0.9.
This will be the tree diagram. Let's move further. Now they said the probability that on a randomly chosen day it is not raining and Aran is not wearing a hat or a scarf is 0.36. Now this is a very important point. Let me write it over here, that the probability that on a random chosen day if it is not raining, probability that if it is not raining and Aran is not wearing a hat, or a scarf. So not scarf, इसका मतलब ये इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. This is equal to 0.36. Let's see this one over here. Now this is the case. So first of all, not wearing a hat, इन सबको अगर हम देखें, so ये आपके पास क्या होगा? Not wearing, not raining, ये portion. Then not wearing a hat, this one. Then not wearing a scarf, this one. तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक probability of not raining and probability of not wearing a hat and probability of not wearing a scarf is equal to 0.36. So which means that this will be 1.1 minus x into 0.7 into 0.9 is equal to 0.36. So 1 minus x will be equals to 0.36 divided by 0.7 into 0.7 into 0.9. This will be equals to 0.63. तो 0.63. अब इसके अगर हम पोजीशन चेंज करें, सो 1 minus 0.36 divided by 0.63 is equals to x. So we can say that 0.63 है, so 1 minus 0.36 divided by 0.63. So this will be equals to 3 by 7. So x will be equals to 3 by 7, which means that this will be equals to, अब ये कंटिन्यूस हो रहा है, सो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 3 by 7 की फॉर्म में ही आंसर लिखें. So this will be the final answer. X will be equals to 3 by 7. This will be the final answer. I hope that the concept is clear. That is it for today. Today we have discussed paper 52 of Feb March 2023. We have discussed from question number 1 to question number 4. Tomorrow we will discuss the remaining questions of this paper. If you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you.